वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट में मैंने आपको दिए हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg water of STP if the intermolecular forces vanish away is. So we know that number of moles of water molecules n. So क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स n, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल n इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई दिस इज molecular weight. So n is equal to, this is 4.5 divided by 1.8 into 10 to the minus 3. So this is equal to number of molecules जो है, this is equal to 250. And we know that what is PV? The PV is equal to, this is nRT. PV is equal to nRT. So what is V? The V is equal to, this is nRT upon P. So this is equal to 250 into, this is 8.314 into 273 and divided by 10 to the power 5. So after calculating this value, so we get this is 5.6, this is meter cube. So this is the correct answer. C part is the correct answer. We can take at STP temperature is equal to 273, this is 273, and pressure is equal to 10 to the power 5 Pascal. Now question number 2. A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal. The temperature and temperature 27 degree Celsius. A density is, density आपसे यहाँ पे पूछा है. So given है क्वेश्चन नंबर 2 में pressure and pressure is equal to, this is 249 kilopascal, and so kilopascal is equal to 249 into 10 to the power 3, this is Pascal. Pascal is Newton per meter square. And mass of hydrogen, so this is equal to mass of hydrogen is equal to 2 gram. So this is equal to 2 into 10 to the minus 3 kg. ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया. And the temperature is 27 degree Celsius. So if you are converting in Kelvin, so this is 27 plus 273. So this is equal to 300 Kelvin. So using the ideal gas equation, PV is equal to, this is nRT. So we can get and also we can write here, this is equal to what is volume, what is density? The density is equal to mass upon volume. So what is volume? The volume is equal to mass upon density. So P, this is mass upon density, is equal to, this is nRT. So what is density? So density is equal to Pm upon RT, and number of mole is equal to 1. So if we take number of mole is equal to 1, so this is equal to Pm upon RT. Now putting the value, so what is P? P is equal to, this is 249 into 10 to the power 3 into what is M? The M is equal to 2 into 10 to the minus 3 divided by what is R? So this is equal to, R is equal to 8.3, R into temperature is equal to, this is 300. So after calculating this value, so we get 0.2, this is kg per meter cube. This is the correct answer. Now next is question number 3. So question number 3 में कहा आपसे कि at 10 degrees Celsius the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. At 110 degrees Celsius this ratio is. So let the mass Vm at a fixed temperature and pressure, volume is fixed. So density of the gas, so density, this is rho, and rho is equal to, this is mass upon volume. So we can write, this is density upon pressure, this is equal to mass upon pressure into volume. हमने pressure से दोनों तरफ divide कर दिया. And PV is equal to, this is nRT, so this is M upon, this is nRT. We know that the ideal gas equation PV is equal to nRT. So this is equal to x आपको given है. So x into t, and x into t is equal to, this is constant. x into t is equal to क्या हो गया? Constant.
सो अगर हम देखें यहाँ पे बिकॉज एम अपॉन एन आर टी इजकल टू एक्स, तो एम और एन आर तो सब कांस्टेंट है, तो एम इंटू टी इजकल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट, एक्स टी इजकल टू कांस्टेंट, सो वी कैन राइट फॉर ए 2 पॉइंट एक्स वन टी वन इजकल टू दिस इज एक्स टू टी टू. So what is x2? So x2 is equal to this is x1 t1 upon t2. Now putting the value, so this is 283 upon 383 into x. So this is the correct answer. So D part is the correct answer. Now next is question number 4. When volume of a system is increased twice and temperature is double, half of its initial temperature, the pressure becomes. So we know that question number 4, we know that PV is equal to this is nRT, PV is equal to this is nRT. If the number of mole is constant and R is constant, so this is PV upon T and this is equal to constant. PV upon T is equal to कितना हो गया, constant. So when volume of system is increased twice, now for a new system, this is volume is equal to twice and temperature is decreased half its initial temperature. वॉल्यूम को डबल कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को 2v कर दिया और प्रेशर को कितना कर दिया, टेम्परेचर का टेम्परेचर इज डिक्रीज हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, सो दिस इज t by 2. सो दिस इज इक्वल टू 2pv अपॉन टी इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 4pv अपॉन टी. सो pv अपॉन टी इक्वल टू 4 टाइम्स. अगर हम इंक्रीमेंट देखें इसमें तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज pv अपॉन टी इजकल टू दिस इज आल्सो कांस्टेंट. सो अगर हम देखें तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दिस वैल्यू इज लेट दिस इज k, सो दिस इज pv अपॉन टी एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट k अपॉन कितना हो जाएगा 4. सो अगर हम देखें तो कहा है कि देन प्रेशर बिकम्स, अच्छा प्रेशर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ से अगर हम प्रेशर निकालें तो प्रेशर कितना हो जाएगा. सो इनिशियल अगर हम देखें तो प्रेशर एंड प्रेशर इजकल टू दिस इज nRT अपॉन क्या हो गया था v. तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लो, इससे ज़्यादा आसान रहेगा. pv इजकल टू nRT अपॉन v. सो न्यू प्रेशर p डैश इजकल टू nRT by 2 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 2v. सो दिस इज nRT अपॉन 4v and nRT upon v is equal to this is pressure. So p dash is equal to this is p by 4. So this is the correct answer. Now question number 5. The equation of a state for a 5 gram of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be. So we know that PV is equal to this is nRT. PV is equal to question number 5. Question number 5. So we know that PV and PV is equal to this is nRT. So यहाँ पे कहा है आपसे कि the equation of pressure 5 gram of oxygen at a pressure P, temperature T when occupying the volume V is 5 ग्राम ऑक्सीजन है. सो नंबर ऑफ मोल इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5 अपॉन 32. सो दिस इज कल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज पी वी इज कल टू 5 अपॉन 32 इंटू आर टी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन ए वेसल द गैस इज एट ए प्रेशर पी इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज हाफ and their speed is double, then the resultant pressure will be. So question number 6 को अगर हम देखें तो question number 6 में ये कहा है we know that pressure and what is pressure. So pressure is equal to this is 1 upon 3 m n upon v and this is v rms a square. So m is equal to what is m? M is the mass of each molecule, n is the total number of molecules, v is the volume of the gas. When the mass is halved and the speed is double, then resultant pressure P is equal to, so this is equal to 1 upon 3 into mass is halved, this is m by 2 and into n by v into this is 2 v rms a square. So if you are calculating this, so new pressure, let this is a P dash, new pressure P dash is equal to, this is equal to 1 upon 3 into m n upon v इंटू वी आर एम एस एंड यहाँ एक 2 है और ऊपर 2 वी आर एम एस से 2 वी आर एम एस का स्क्वायर है तो 2 बच जाएगा यहाँ पे. सो न्यू प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर.
Now question number 7. At 0 Kelvin, which of the following properties of a gas will be 0? So at 0 Kelvin, kinetic energy is 0. जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, मॉलिकुलर मोशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है. सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज. So we know that root mean square speed is directly proportional to question number 8. So we know that Vrms is directly proportional to root under temperature. So initial temperature is, so this is T1 and T1 is equal to, this is 300 Kelvin and T2 is equal to 9 and 10, 11, 12. So this is 1200 Kelvin. So Vrms 1 Vrms1 upon this is Vrms2 is equal to, this is equal to root under, this is 300 upon 1200. So this is 4, so this is 1 upon 2. So we can write, so this is Vrms2 is equal to 2 times of Vrms1. मतलब जो स्पीड है वो डबल हो जाएगा, गेट डबल. ठीक है. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. Now next, 9th question. Relation between pressure and energy density of a gas is. So the relation, आपसे relation पूछा है and we know that relation is equal to, this is equal to 2/3 kinetic energy, pressure is equal to 2/3 kinetic energy. So A part is the correct answer. Now next question is question number 10 and in question number 10 यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक तरफ कॉलम ए है, एक तरफ कॉलम बी है. ठीक है. तो दोनों कॉलम में आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. सो वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल. सभी को पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर जो गैस मॉलिक्यूल होता है, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. तो इसी तरह से आप डायटोमिक ट्राइमेट्रिक जो पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर देखोगे आप, तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस होता है पी इज इक्वल टू 1/3 nm v बार स्क्वायर हो जाता है. सो ये हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस. सो इस तरह से आप देखोगे तो ये डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट में पूछा है आपसे यहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर आप करते हैं सो क्या हो जाएगा. सो वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज F/2, F/F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, nRT. सो एज वी कैन राइट दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज टेम्परेचर का स्क्वायर. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी पे गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. यस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो उसमें थर्मल एनर्जी आ जाएगा, उससे मोशन इंक्रीज करेगा और उससे उसकी जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज आपकी यहाँ पे कर जाएगी. ठीक है. सो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो ऐसे भी सोचो कि अगर गैस मॉलिक्यूल है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करवा देते हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, थर्मल वाइब्रेशन मोशन आ जाएगा, उसमें एनर्जी आएगा जिसके कारण मॉलिक्यूल भागना शुरू करेगा इधर से उधर, तो वेलोसिटी आ जाएगी उसमें, इंक्रीज करेगी. और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसका फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर.